a function whose domain is set of all positive integers मतलब कि नेचुरल नंबर का सेट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर is all positive integer is called an arithmetic function. Okay, now the second definition is for multiplicative function. Okay, now the definition of multiplicative function: a number theoretic function if is called a multiplicative function if it satisfies the multiplicative property, which is f of mn equals to f of m into f of n for m and n belongs to natural number with GCD of mn equals to 1. अगर आपको नेचुरल नंबर का सेट नहीं पता तो नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 1, 2, 3 and so on. Okay, now number of positive divisor function. Number of positive divisor function. Definition: the number of positive divisor function tau n to n, natural number to natural number. This is also known as tau function, defined by tau of 1 equals to 1 and tau of n equals to the number of positive divisor of n, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है. ओके, नाउ एग्जांपल: tau of 1 equals to 1, क्योंकि 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है, सो tau of 1 equals to 1. tau of 2 equals to 2 because 1 and 2 both divide 2, so number of positive divisor of 2 is 2, so tau of 2 equals to 2. tau of 3 equals to 2 because 1 and 3 only those two positive divisors divide 3, so number of positive divisor of 3, that is tau of 3 equals to 2. tau of 8 equals to 4, क्योंकि 8 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1, 2, 4 and 8, so number of positive divisor for 8 is 8. अगर tau of 16 हम निकाले, so 16 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1, 2, 4, 8 and 16, so tau of 16 is equals to 5 and tau of 25 that is equals to 25 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1, 5 and 25, so tau of 25 equals to 3. Similarly tau of 12 को डिवाइड करता है 1, 2, 3, 4, 6 and 12 खुद, so tau of 12 equals to 6. ओके, अभी जो गिवन नंबर है वो कोई लार्ज पॉजिटिव इंटीजर हो तो हमारे लिए नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. तो हम एक ट्रिक सीखने वाले हैं. लेट n greater than 1 and n equals to p1 to the power alpha 1, p2 to the power alpha 2 dot pk to the power alpha k.
where P1, P2, Pk are distinct primes, primes, and alpha I always greater than equals to 1 for I equals to 1 to ... k. Then tau of n is defined by tau of n equals to क्या होगा, जस्ट प्राइम के जो पावर पे है o प्लस 1 इंटू जो सेकेंड डिस्टिंक्ट प्राइम के पावर पे है अल्फा 2 प्लस 1 डॉट अल्फा के प्लस 1 ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा. ओके, दैट इज इक्वल्स टू टाउ ऑफ n, द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n. अभी अगर आपको जनरल फार्मूला समझ में नहीं आया है तो एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड टाउ ऑफ 100. सो 100 के हम कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. आप 100 को ऐसे प्राइम डिकम्पोज कर सकते हैं, 2, 50, 2, 25, 5 इंटू 5, सो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर जैसे हम बचपन में करते थे. देयरफॉर टाउ ऑफ 100 इक्वल्स टू जस्ट पावर में जो है उसके साथ 1 प्लस हो जाएगा इंटू इसका भी पावर में जो है उसके साथ 1 ऐड हो जाएगा एंड दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो कि P1 टू द पावर अल्फा 1, P2 टू द पावर अल्फा 2 डॉट Pk टू द पावर अल्फा के ऐसे था. सो अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 2 ऐसे होता था. सो टाउ ऑफ 100 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 9. So tau of 100 equals to 9. Now the second one is tau of 360. Okay. Now 360 equals to 2 to the power 3, 3 to the power 2, 5 to the power 1. You can also do prime decomposition. आप करके देख सकते हैं. That is equals to 3 plus 1 into 2 plus 1 into 1 plus 1. Okay, this is equals to 4 into 3 into 2, that is 25, 24. Find tau of 1024. Now 1024 equals to 2 to the power 10. Therefore tau of 1024 equals to 11.